हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कांत। अभी मैं मुंबई के अपने क्लिनिक में प्रेजेंट हूँ और ये हमारे पेशेंट जो आई हैं। हेलो मैम, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शाइना है और मैं अभी पिछले 3 साल से मुंबई में रहती हूँ और मैं चंडीगढ़ से बेसिकली बट मैंने वहाँ भी इलाज करवाया। मेरे ये बैक पेन रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ भी इलाज कराया कुछ डॉक्टर से, बहुत यहाँ भी इलाज करवाया कि मुंबई में तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं बट मेडिसिन से ट्रीटमेंट करवाया कोई फायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड मिली मुझे तो उन्होंने आपके बारे में बताया मुझे। हाँ जी, आपके बारे में कि कोई वहाँ पे क्लिनिक है बिजनेस। मैंने कहा ठीक है मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। अब इतनी जगह जा चुकी हूँ तो यहाँ भी आना बनता था ना, तो मैं यहाँ पे वापस आ गई। ये बैक पेन आपको कितने टाइम से हो रहा है? हो गए 3 साल हो गए मुझे। 3 साल से। वैसे मैं प्रोफेशन क्या करती हूँ? मैं एक्चुअली सर आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट जी। ज़्यादा क्लास टाइमिंग इधर उधर बहुत ज़्यादा जी, होता है। तभी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पता ही है एक बार अगर हमें पैसे दे तो काम तो लेना ही है क्योंकि कभी बैठो कभी तो ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रेट रहना बैठना उठना बहुत प्रॉब्लम होती है। खाने पीने कभी कभी रात के 2-3 भी बज जाते हैं तो शायद बैठने की वजह से हो गया नहीं हो होगा। सकता है क्योंकि अपने ये लाइफ स्टाइल है जैसे आपको कैसे है लॉन्चिंग कभी भागदौड़ करना ये सब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है, कभी बैंगलोर जाना कभी केरल जाना कभी त्रिवेंद्रपुरम कभी चंडीगढ़। देखो आपको बताइए कि पिछले 2 दिन पहले भी मैं केरल जाके आई हूँ तो बस अप डाउन बहुत रहता है शायद इस वजह से भी पता नहीं। और मैं एक छोटी सी सजेशन और देना चाहता हूँ। जो हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्या इसे हम लोग सोशल मीडिया के यूज कर सकते हैं? जी श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम पूरा डायग्नोस करते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? इस बेड पे आएंगे मैम, लेट जाएंगे। जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको नेक में भी है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थोड़ा सा दर्द रहता है बस। थोड़ी नेक में भी। कभी कभी समटाइम आपको हेडेक होगा ये लेफ्ट हेडेक यहाँ पे होता है यहाँ भी ऐसा है लेफ्ट हेडेक है ऐसा है। ये आपने कैसे समझ लिया? ये अपना डायग्नोस है ना। कभी कभी सो के उठ के होता है वैसे नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ C4 और 5 का ये इधर भी कुछ नहीं नहीं इधर हो गया बस इधर राइट शोल्डर अब थोड़ा आपको करना क्या है उल्टा होकर लेट जाना है। थोड़ा सा स्पाइन को ना लेट कर इसी पर उल्टा होकर बैठाना इस पर रखना हाथों को दोनों पीछे ले लेना बॉडी को एकदम रिलैक्स हो जाना। थोड़े एब्डोमिनल इश्यूज है जैसे गैसेस वगैरह बनना भूख कम लगना ये सब सारा होता है। लेग का थोड़ा 4-5 पे थोड़ा पेन आ रहा है डकोरा हो यहाँ बस बॉडी को एकदम रिलैक्स हो गई रिलैक्स लाइक दिस। Little bit mobilization before adjustment, like mobilization helps in adjustment. First of all, it is like a CD tension. एक लंबा सांस लेंगे ना, छोड़ेंगे, बस और लंबा सांस, छोड़ेंगे, बस एक लंबा सांस लेंगे,
One again. Relax. Into the body of the left. No something. Sorry. Okay. Relax. One again. Okay. Lay down the street. Yes, sir. चेहरा पर रिफ्लेक्ट रहेगा. बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स. लंबा सांस लेंगे. छोड़िए. Are you okay? One again. अभी मैं टच करूंगा तो उतना पेन फील नहीं होगा. नहीं होगा ना. सेम राइट. एक और लंबा सांस लेंगे. छोड़ेंगे. बस. ये फील कहाँ हो? बैक पे गया. ऐसी बॉडी को रिलैक्स रखेंगे. लेकिन थोड़ा बॉडी को टर्न करेंगे आप उधर. हाँ थोड़ा और रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स. इसको लॉक करेंगे. लॉक से लॉक. नीचे लगाए उसे करेंगे. बॉडी एकदम रिलैक्स करेंगे. एक लंबा सांस लेंगे. छोड़ेंगे. बस बस वन मोर. ओके. अब ऐसे ही टर्न इधर हो. थोड़ा और आगे. रिलैक्स. नीचे रिलैक्स ना. इसे लॉक. बॉडी रिलैक्स. एक लंबा सांस लेंगे. नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है. रिलैक्स. Are you okay? Yes. Lie down the sit. देखिए आप राइट लेग पे ज्यादा सपोर्ट करते हैं. देखिए आपका लेग लेंथ देखिए. राइट थोड़ा शॉर्ट है. देखा आपने कभी आपने गौर नहीं किया हो. आप यूं ज्यादा खड़े होते हो. ऐसे ज्यादा खड़े होते हैं वन लेग पे. इसकी रीजन है ये वन लेग आपका शॉर्ट नहीं है. देखो किधर आ गई. बॉडी को रिलैक्स करो. Relax. Relax. Loose. Body become loose. Relax. Relax. Loose. अभी देखिए. ठीक है. Body will relax. Loose. इसे फोल्ड करेंगे. Okay. एकदम बॉडी को लूज छोड़ेंगे. रिलैक्स. ये बैक को अंदर की ओर प्रेस करेंगे. प्रेस करेंगे. प्रेस करेंगे अंदर. अंदर प्रेस करेंगे. ऐसे. ओके. प्रेस कीजिए.
पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर को फोल्ड, दोनों घुटने को ऐसे आपस में दबाना है, दबाएंगे दबाएंगे, उठ जाएंगे आप, चेयर जाएंगे आप, इस चेयर पर आएंगे, आप वैसे सीधे बैठते हैं, बस काफी फ्री फ्रीज लग रही है बॉडी। body will relax. Relax. Got it. Relax. Are you okay? Yes, yes, yes. कभी आपने सोचा होगा कि मेरे बॉडी से इतना आवाज आ सकते हैं? ऐसे लग रहा है जगह जगह छोटे छोटे बम हैं, छोटे छोटे पटाखे। थोड़ा खड़े हो जाइए ना आप। इधर बैक टर्न में, बैक टर्न और आगे देखिए थोड़ा पीछे। Body को relax. Body को relax, आँखें को close, relax. Relax. लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे. Relax, relax, relax. That's. थोड़ा ये रहेगा. मेरे बॉडी पे सो जाएगी, यही रहेगा, सो जाएगी, यही रहना है, यही रहना है, चलना नहीं, लंबा सांस लेना, छोड़ेंगे, लूज लूज, ओके, बस, बिल्कुल इसी तरह, एक बार से लेट जाएंगे स्ट्रेट, अपना कैसे वगैरह का जरूर होता है। नीचे इस बॉडी को रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, दोनों हाथ को ऐसे लॉक करेंगे, बस ऐसे रिलैक्स रिलैक्स, बस दोनों को टाइट करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस आप थोड़ा वॉक करेंगे, और बताएं कैसा फील हो रहा है? फ्री फील लग रहा है, सब कुछ है नहीं। पहले बहुत पेन हो रहा था, चलते में यहाँ पे पेन हो रहा था, पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं बॉडी में, बॉडी टोटली रिलैक्स हो चुका है। हाँ मैं बोल रही हूँ सीरियसली, बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब ये फ्री बॉडी हो गई ये एक्सपीरियंस आपके लिए अमेजिंग रहा, बहुत अमेजिंग, मतलब सोच भी नहीं सकती थी ऐसा रहा। थोड़ा मतलब कुछ कहना चाहिए जो आपकी तरह जो मतलब इस टाइप से जो, अरे हाँ मैं आपको सबको ये कहना चाहूंगी, देखो अगर आपके कहीं भी बॉडी में पेन हो, मैंने तो सिर्फ बैक पेन बताया था, इन्होंने मेरा सारा पेन खत्म कर दिया, मुझे सच में नहीं पता था, इन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पेन होता है, मैंने बताया भी नहीं था, देखो आपके सामने मैंने नहीं बताया था इन्होंने कि मेरे को यहाँ पेन होता है या गैस भी है, इन्होंने ही बताया, मुझे नहीं पता लगा, बाकी इन्होंने ठीक भी कर दिया। मैं कहूँगी आप भी यहाँ आओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ आओ, इन डॉक्टर से मिलिए, और आप इन्हें एक अपनी बीमारी बताएंगे, आपको लाखों बीमारियां आपके अंदर की बता देंगे और उन्हें ठीक भी कर देंगे, वो भी बिना दवा के। आप देख ही सकते हैं सारी बॉडी में से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे अखरोट टूट रहा है, कड़क कड़क। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, थैंक यू।